Well, hello and welcome. Welcome back. बहुत दिन बाद लाइव कर रहे हैं and obviously this is after the World Cup. World Cup finals आज हैं. But yeah, and it hasn't been a good 2 weeks to be honest. Last दो तीन हफ्ता is kind of disappointing as far as cricket is concerned. Uh, did not qualify after a very long time. Uh, and it is like that. But you know what? This is how I see it. मुझे ऐसा लगता है कि क्राइसिस है, लेकिन इसी क्राइसिस में ही एक अपॉर्चुनिटी भी पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम लोगों को T20 खेलना चाहिए। आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम लोग T20 थोड़े से अलग तरीके से खेलते हैं। मेरे ख्याल से ये क्राइसिस जो है इसमें कम से कम पीपल आर टॉकिंग, और मेरे ख्याल से वो एक सिल्वर लाइनिंग है इस पूरे क्राइसिस में कि आप एटलीस्ट बात कर रहे हैं, आप अपना अप्रोच चेंज कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने अप्रोच चेंज किया लास्ट दो तीन मैचेस में। आई थिंक दोज कुड बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव, अगर आप कह सकते हैं, कमिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। राइट, लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। I know Australia versus New Zealand, जो भी अच्छा, we've got a question straight away. Sir, why India doesn't have philosophy like other teams, like England plays aggressive brand of cricket, New Zealand philosophy is process. Very good question. और मेरा ये मानना है क्योंकि we are very to a certain extent player based. तो अगर कोई प्लेयर एक एक तरीके से खेलता है, we we depend on them. बट एज अ टीम, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एज अ टीम जो है, देयर हैज टू बी अ फिलॉसफी, देयर हैज टू बी अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ फॉर्मेट। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि अभी तक इंडिया का वैसा था नहीं, वेरी जेनरिक था कि अच्छा टॉप थ्री जो हैं वो रन बनाएंगे, वो उनमें से कोई एक या दो 12वें 13वें ओवर तक रहेंगे और फिर बाद में आके मिडिल ऑर्डर विल बड़े शॉट खेल के 160 170 पहुंच जाएंगे, which is fine, which is, to be honest, has worked. ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन it is very individual based, कि क्योंकि इंडिया के पास वैसे इंडिविजुअल है, केएल राहुल, रोहित, विराट, शिखर इसके पहले, तो वो ऑप्शन थे अपने पास और हैं अपने पास, तभी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म I think we cannot be depending on one, two, three players. We'll have to be पूरा 11 जो है 11 के 11 will have to depend on them. And secondly, जैसे आपने कहा कि there has to be a philosophy. It can't be individual based, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। Right. What do we have, Rahul? Sir, do you think our Indian players always play at top four in their respective teams and no one comes at lower order, but while playing for India, they come at 5, 6? Do you think role clarity should be given? Rahul, I've said this before and you're absolutely spot on. Okay, Rahul, what happens is, अगर हम ये सोचे कि एक प्लेयर लाइमलाइट में कैसे आता है, एक प्लेयर लाइमलाइट में आता है जब वो ओपन रन बनाता है, करेक्ट? और रन कौन बनाते हैं इस फॉर्मेट में, खास करके या व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जो 1-2-3 पे बैटिंग करते हैं, राइट? उनके पास ज्यादा मौका है रन बनाने का। तो कोई भी बच्चा या नेक्स्ट जनरेशन का आप जब नाम सुनते हैं, आप सुनते हैं क्यों? क्योंकि वो रन बना रहा है, चाहे पेपर में हो, मीडिया में हो, तो रन टॉप 3 में खेल रहा है तभी बना रहे हैं, टॉप 4 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब वो आता है, फिर वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि फिर 5-6 में हम उनको ढूंढते हैं कि अच्छा 5-6 में आप खेलो। बट 5-6 जो है, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्लेस। तो दो चीजें हैं, या तो यू पिक अप जो खेलते ही 5-6 में, इवन दो दे माइट स्कोर माइट नॉट स्कोर as many runs as top 3. For example, you can look at someone like Azharuddin, you know, or rather Shahrukh Khan, for that position number 5-6 में, जो खेलता ही 5-6 में, मौका कम मिलता है, लेकिन he has the skill set. तो या तो आप वो करो कि आप स्किल सेट पकड़ो, आपने 2-3 प्लेयर का आपने स्किल सेट ले लिया, अच्छा हमें एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, इररेस्पेक्टिव वो कहाँ पे बैट करता है, यू नो। वेंकटेश अय्यर, ठीक है, वो ओपन करता है, लेकिन अभी ओपन तो कर नहीं सकता, लेकिन उसके पास वो चीजें हैं जिसकी जरूरत है, तो उसको फिर आप उस हिसाब से बनाओ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, फिर प्रिपेयर हिम, मेंटोर हिम। सो ये दो तरीके हैं। वेंकटेश अय्यर वाला एग्जांपल जो है, ओपन से आप उसको 5-6 पे खिलाओ,
and groom him to play there and give him that long rope, give him that कि आप खेलो यार, आप चिंता मत करो, 2-3 मैच नहीं मिलेंगे आपको, आप खेलते रहो. So you groom him उस जगह पे. Yeah, you pick someone like a Shahrukh Khan and say, you know, आप 5-6 पे ही खेलते हो, चलो आप जाके खेलो, even though he might not be scoring as many as the top 3-4. तो वो आई थिंक ये दो ऑप्शंस हैं, और we'll have to look into it, क्योंकि बिल्कुल राहुल, जैसे आपने कहा कि we are so top heavy at times, और वो स्वाभाविक सी बात है, that is natural, right? To top question to start off with. Worst gamer, okay. What has changed for Australia team for the last T20 World Cup and last two series against Bangladesh, West Indies, where they lost radically? Right. Worst gamer, okay. Uh, if you look at the Bangladesh series, I think Bangladesh series were played on absolute tonners. 120, 130 स्कोर हो रहे थे, which were like does not suit Australia. अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया को वैसा सूट नहीं करता. ऑस्ट्रेलिया को, आई मीन, किसी भी टीम को दैट बिकम्स अ लॉटरी. वेस्ट इंडीज वाला भी. अगर आप देखें फिर टीम, अगर आप बांग्लादेश का टीम उठा के देख लें, जो ऑस्ट्रेलियन टीम था उसमें काफी लोग गए नहीं थे, स्टार्क वगैरह नहीं गए थे, पैट कमिंस स्टार्क के लोग नहीं गए थे. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक तो टीम वाजंट 100%, और साथ में द कंडीशंस वर टोटली डिफरेंट, वेरी एलियन टू व्हाट ऑस्ट्रेलियंस आर यूज्ड टू. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि पहला मैच जब वो लोग खेले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो मेरे ख्याल से 124 या 122 को चेज करना था, 118 चेज करना था. दे लुक वेरी रस्टी. अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट कमिंस, दे लुक रस्टी, क्योंकि मिचेल स्टार्क 1 साल बाद खेल रहा है, पैट कमिंस 6 महीने बाद. एरन फिंच ऑपरेशन से आया, घुटने के ऑपरेशन, वो भी लगभग 1 साल बाद ही खेल रहा है. सो दे लुक रस्टी, बट जैसे जैसे खेलते गए दे केप्ट इम्प्रूविंग. हर एक मैच में यू कुड सी की इम्प्रूवमेंट आ रहा है. सो आई थिंक दे पीक, जिसे कहते हैं ना कि पीकिंग एट द राइट टाइम. आई थिंक दे पीक्ड एट द राइट टाइम. दे पीकिंग रादर, अभी आज फाइनल्स है, सो दे पीकिंग एट द राइट टाइम इज व्हाट आई थिंक. और आई थिंक दोज वर द रीजंस. गेमर, ओके. कपिल वर्मा साहब क्या कह रहे हैं? व्हाट अबाउट राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा कॉम्बिनेशन? आई थिंक इट शुड बी ब्रिलियंट. सी ऑलरेडी जो चीज जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई थिंक जो सबसे पॉजिटिव चीज रहा है इस वर्ल्ड कप से इस किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं T20 को, और जिस तरीके से लास्ट 3 मैचेस में अप्रोच किया है इंडियन टीम ने, खासकर टॉप टू केएल राहुल और रोहित, वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग था. आई थिंक यू ऑलरेडी हैव दैट टेम्पलेट विथ राहुल और रोहित. नाउ आई थिंक उस टेम्पलेट को आगे बढ़ाना है. द बेस्ट पार्ट अबाउट रोहित एंड राहुल, राहुल ऑब्वियसली बिलीव्स इन कंसिस्टेंसी वगैरह. आई मीन ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उसमें कोई दो राय नहीं है. और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया, इफ यू गाइस वांट टू हैव अ लुक एट इट. पिछला वाला वीडियो था, पिछला वाला अबाउट द चेंजेस इन द इंडियन साइड. अभी राहुल्स बिन ब्रिलियंट. रोहित का और एक चीज जो फ्रॉम हिज कैप्टनसी वी नो मुंबई इंडियंस का इज ही डज नॉट लाइक टू चेंज प्लेयर्स, राइट? लगभग सेम प्लेयर खेलते रहते हैं मुंबई इंडियंस के लिए. तो वो एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि अगर आप चेंज कर रहे हैं अपना फिलॉसफी, तो ये तय सी बात है कि रेट ऑफ सक्सेस इनिशियली बहुत ऊपर नहीं होगा, क्योंकि एक नया फिलॉसफी, एक नए तरीके से आप खेल रहे हैं. रोहित और केएल राहुल थोड़े से ज्यादा चांसेस ले रहे हैं, राइट? अगर आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब चांसेस आप ज्यादा ले रहे हैं. चांसेस आप ज्यादा लेंगे मतलब देयर इज अ गुड चांस आपका सक्सेस रेट थोड़ा सा नीचे आएगा. तो दैट बी इम्पोर्टेंट कि अगर 2-3 मैच फेल करते हैं, दे शुड नॉट गो बैक टू वही पुराना वाला सिस्टम. दे शुड स्टिल कंटिन्यू विद इट. दे शुड नॉट चेंज प्लेयर्स दैट ऑफन, कि 2-3 मैच खराब हो गया तो भैया आपने चेंज कर दिया. तो वो चीजें जो हैं, आप जानते हैं रोहित वैसा नहीं करता बतौर कप्तान. ही विल नॉट चेंज हिज टीम हर 2-3 मैच में. एंड वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी विल सी होपफुली with Rohit and Rahul. Akash, Deep, so what do you think
that the unavailability of Conway will cost Nizal how much? Uh, okay, so unavailability of Conway, and obviously he injured himself. ज़्यादा upset हो गए थे, बैट पे घुसा मारा. Um, so okay, so it will. How much will it cost? I think it will cost a bit, आकाश, क्योंकि एक तो वो मिडिल ऑर्डर में जिमी नीशम उनके बाद थे, बट नंबर 4 पे लेफ्ट हैंडर एक उनके जैसा रहना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके पास वो क्रिकेट है, उनके पास वो स्किल सेट है कि आप सीमर और स्पिन दोनों को अच्छा खेल सकते हैं. चाहे वो मैक्सवेल डाले या एडम जैम्पा डाले, बिकॉज एडम जैम्पा इज अ बिग थ्रेट. तो वो स्पिन, और द रीजन कॉनवे को 4 खिलाया जा रहा है इज बिकॉज वो स्पिन अच्छा खेलते हैं. जिमी नीशम हम जानते हैं कि उतना खास नहीं है, ग्लेन फिलिप्स उतना खास नहीं है, ऑब्वियसली केन विलियमसन बहुत अच्छे हैं स्पिन, लेकिन वन ही इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म, सेकेंडली ही नीड सपोर्ट, अकेले तो कर नहीं सकते. तो उस लिहाज से आई थिंक कॉनवे विल बी मिस्ड. बीच के जो 4 ओवर कम से कम जैम्पा के हैं, यू डोंट नो, मैक्सवेल डाल सकते हैं व्हाटएवर. सो वो 4 ओवर वुड बी वेरी क्रूशियल कि कॉनवे नहीं खेल रहे. साथ में जो हो सकता है वो ये कि आई हैव अ फीलिंग इधर जिमी नीशम 4 पे आएंगे या सैंटनर को भी 4 पे खिला सकते हैं, जस्ट टू that keep that left right combination going. That might be the other thing that might happen, Akash. But yes, he will be definitely missed. Seifert आएंगे मेरे ख्याल से उनकी जगह, कॉनवे की जगह Seifert आएंगे, but again a right hander, good batter. बट या तो उसी लिए हो सकता है कि सैंटनर को 4 पे करते, क्योंकि साइफर्ट ऑलरेडी पीछे बैटिंग करेंगे फिर. नहीं. जय शिरके साहब, okay sir, we have seen bowling all-rounder like Vijay Shankar, Shivam Dube, but we didn't use them well. What do you think? Just I think to a certain extent yes, कि और to a certain extent they also haven't done that great. अगर आप विजय शंकर की बात करें तो आईपीएल में ठीक है, आईपीएल में भी नहीं खेल रहे थे, आईपीएल में भी बॉलिंग नहीं डाली उन्होंने. शिवम थोड़ा सा दिख रहे हैं, कमिंग बैक इन फॉर्म, या मच्योर होते हुए दिख रहे हैं शिवम. सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए शिवम. विजय का मुझे पता नहीं, बिकॉज ही इज नॉट दैट यंग, तो आई एम नॉट टू श्योर किस पोजीशन में इस वक्त है विजय शंकर. बट समवन लाइक शिवम दुबे, आई थिंक थोड़ा सा वक्त दे उनको, और लाइक जैसे मैंने कहा विद वेंकटेश अय्यर, शिवम अगेन समबडी जो खेलते मिडिल ऑर्डर में हैं, बिग हिट लगा सकते हैं, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. तो थोड़ा सा we need to spend some time and energy behind ऐसे players जो already ये काम कर रहे हैं, maybe in a different position, maybe in the same position in place of Shivam. I think it is important कि उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए. Sir, do you think we need to replace Pujara and Rahane in the test side with players like Gale, Iyer and Agarwal to groom them for the future? See, I don't think कि just because किसी को ग्रूम करना है तो एग्जिस्टिंग जो है उनको आप बाहर निकाल दें. इशमान, हाँ इशमान, मुझे ऐसा आई डोंट थिंक सो. आई थिंक देयर हैज टू बी अ गुड इनफ रीजन. आई थिंक either someone like Ajinkya and Pujara might not, I mean, should be out of form or should not be scoring, or Iyer, Agarwal and Gill has to be scoring tons and tons of runs to push them out of their position. I think just because they are youngsters uh, does not give them the, I think, the place that easily. It shouldn't be that easy for them to get to that place. I think they should get to it. That they should kind of deserve it. Yeah, and we'll have to see. Pujara and Rahane, I think they've, especially Pujara, I think he was fabulous in England last ke 2-3 innings. Again, it seems he seems to have reinvented himself. But obviously the spotlight अजिंक्य के ऊपर जरूर रहेगा. मेरे ख्याल से 2 series, ये वाला and South Africa, will be very very crucial for Ajinkya. And obviously if you're not performing, चाहे वो अजिंक्य हो, पुजारा हो या कोई भी हो, you will have to make way. इसमें कोई दो राय नहीं है इशमान के, you will have to make way for the next lot.
But yeah, but you still have to kind of give them the opportunity to kind of fail. Right, Kaushik. Sir, will the resting of Rohit and Kohli make top order fragile? Uh, I listen. This is Kaushik exactly my point when I spoke about it should not be individual based. Yes, it will. Obviously, you don't have Rohit and Kohli. Ka, obviously, quality is different, but it should not be about one, two, three players. क्योंकि अगर हम fearless cricket खेलेंगे, sorry, एक मिनट हाँ, sorry, एक मिनट. Sorry guys. Yeah. So my point is अगर हम fearless cricket खेलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप खुल के खेलें, तो रोहित और विराट और केएल जरूरी नहीं कि हर एक मैच में दे बी गेटिंग इट. बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर fearless क्रिकेट खेलेंगे और जैसे खेला इंडिया ने लास्ट दो तीन मैच में, द सक्सेस रेट विल कम डाउन अ बिट. उतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, तो वी कांट बी पॉसिबली डिपेंडिंग एज गुड एज दे आर. We'll have to show more faith at number 4, 5, 6, 7, 8. So मेरे ख्याल से yes, uh, as great as they are, Rohit and Virat, but I think we'll have to start, kind of spreading the whole responsibility over all 11 players, all 7, 8 guys who can bat, not just 1, 2, 3. In terms of personnel, अगर कौशिक देखा जाए तो you have enough talent, to be honest. I'm not comparing, but Rutu looked very good. Ruturaj looked extremely good in the IPL. So just give them an opportunity. Yeah, yeah. Right. Got Rakesh. Oi, this is Apna Raka. Oi, Rakesh. Hi, Rakesh. How are you? Do you think the absence of Hardik Pandya, India should look to find some specialist finishers besides Pant? Yes. Do you think Deepak Huda should be given a chance? Okay, at some point. Uh, Rakesh, I think we need to groom, and I mentioned it a while ago. There are two ways to look at it, but bottom line, we need to groom. Because more often than not, we play people out of their position. Uh, for example, Rishabh generally, अभी भी मुझे लगता है is a top 3, top 4 batter, but he bats at 5, 6. So got to kind of give him that space कि हाँ चलो आप खेलो and learn on the job. That is one. The other thing is, or the other option is get people like Deepak Huda, Shah Rukh Khan, जो already खेल रहे हैं, but might not has the skill set, लेकिन उतने रन नहीं बना पाते. Because obviously अगर कोई 5-6 पे खेलेगा तो उतने रन नहीं बनाएगा as compared to top 3 में. तो या तो फिर यू लुक एट स्किल सेट कि चलिए ये स्किल सेट इनके पास है, इनको फिर ग्रूम करें. या तो कोई पर्टिकुलर स्किल सेट आप ढूंढ रहे हैं, जैसे वेंकटेश अय्यर का मैंने एग्जांपल लिया था कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन हाँ, इंडिया को चाहिए भी, लेकिन टॉप 2-3 में जगह नहीं बन रही, तो उनको 5-6 पे खेलना पड़ेगा. तो अगर 5-6 पे खेलना पड़ेगा तो फिर देन ग्रूम हिम अकॉर्डिंगली फॉर दैट पोजीशन. सो वील हैव टू बी पेशेंट. देयर इज नो टू वेज, क्योंकि एंड ऑफ द डे उतना आसानी से मिलते नहीं है फिनिशर्स, 5, 6, 7 ऐसे खेलने वाले. वी ऑलरेडी हैव जडेजा. मुझे लगता है कि जडेजा ने जिस तरीके से बैटिंग किया पिछले 2-3 साल, वी नीड टू शो मोर फेथ इन हिज बैटिंग. एट टाइम्स हो सकता है कि ऋषभ एंड जडेजा बोथ आर लेफ्ट हैंडर्स, तो यू वांट अ राइट हैंडर इन बिटवीन. बट कभी कभार ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर नॉट bowling टू लेफ्ट हैंडर, ये जो चीजें हैं थोड़ा सा हम एट टाइम्स भी ओवरडू इट. I think if there is quality, respective कोई left hander है या right hander. But yeah, I agree with you कि we need to kind of groom finishers without a shadow of doubt. Hi Aditya Shamka, what should your playing 11 be against New Zealand? Oh, that's a good one. Uh, let me quickly. It's Children's Day. Let me quickly go to it. मैंने लिखा नहीं था.
Okay, Aditya, I'll get back to your question in a bit for sure. Let me just quickly have have a look at it. I'll take some other question, Aditya, but I'll get back to you for sure. I'm gonna write it down. Yeah. So if we can have the next question, please. Yeah. ITG aspirant. Sir, do you think Ruturaj should get a chance to open a T20 series? Uh, okay. Now the question is this, that uh, you already have Rohit there. You already have KL Rahul there. How do you, I mean, why did you pick them then? अगर रोहित तो कप्तान है वो तो खेलेगा ही, राइट? उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रोहित खेलेगा ही. फिर अगर केएल राहुल को आपने नहीं खिलाना था, बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस फोर ओपनर वाला सिस्टम. अगर आपको नहीं खिलाना था तो देन should have rested him, no? Because he's also been part of a bubble playing non-stop cricket. So I just personally think it does not make sense uh, to have so many openers, because I doubt ऋतुराज को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज तीन T20 आईज है. ऐसा नहीं कि पांच है तो आपने दो खिलाया, तीन खिलाया, फिर रेस्ट करवाया, फिर आप आ गए. बिकॉज इट अगेन फॉर मी, अगर आप रोहित कप्तानी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तीनों खेलेगा. केल को आपने रखा है तो ऑब्वियसली खिलाएंगे आप. सो आई फाइंड इट अ लिटिल आउट ऑफ पोजिशन. क्या खेल सकते हैं? वेल, आउट ऑफ पोजिशन खेल सकते हैं, बट या I I I don't know why they picked Ruturaj. If they had to pick Ruturaj and make him play, then they should have rested someone like a KL Rahul and got him for the test matches. Right. Hmm. Vishal, what do you think you see Prasidh Krishna playing first test match versus New Zealand? Um, so Prasidh was bowling extremely well in England as well. I was hearing, ki Prasidh Krishna might play, Prasidh Krishna might play. So there is a very good chance of Prasidh playing in that. Uh, so that is, and I think he's a better red ball bowler than white ball. I'll be honest. I mean, that's honestly what I think. I think they should look at Prasidh Krishna. They should start looking at the next generation. और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि this is my feeling that next एक दो साल में we will see a transition. Uh, we will see a transition period in Indian cricket. You can't expect Ishant, even Shami, Bumrah, workload management, Bhuvi, bowling phase में you see all those guys kind of मेकिंग वे. तो आपको तैयार रहना होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. बैटिंग में भी मे बी 2-3 साल में you have to see where someone like Pujara stand, obviously Ajinkya, where they stand. So it's going to be important कि आप धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट लॉट को तैयार करें. हालांकि you might look at आप कितने सीमर खिलाएंगे. उमेश है, ईशांत है, सिराज है, तो आप सिराज को जरूर खिलाएंगे. सिराज hasn't played a lot of cricket, so सिराज को आप जरूर खिलाएंगे. He's been rested. ईशांत, उमेश has been rested. Uh, I I I don't know. मेरे ख्याल से अगर pitches generally you might go with two seamers. You might not go with three seamers. If that's the case, then uh, you have Ishant and Umesh and Siraj. So मैं लग रहा है सिराज खेलेगा, एक मैच में ईशांत खेलेंगे, एक मैच में उमेश. ऐसा मुझे लगता है विशाल. Right. Usually you select your team 6 months ago and one or two changes at last, but this time half of the team were not part of the team recently. I don't think this team has played together once before World Cup. Adi, changes कौन है? Not really. आदि अगर आप सोचे शामी, बुमराह expected, भूवी, yes. बैटिंग की तरफ जडेजा has been there, ऋषभ's been there,
श्रीलंका ऑब्वियसली दीज गाइज weren't there, they were in England. तो उसके पहले वाले जो सीरीज आप इंग्लैंड सीरीज देख लें, सूर्या was there, ईशान was there, obviously Virat, Rohit, Kale was dropped actually, but he got back. I think it's the same team, to be honest. Rishabh was there, Jaddu. The only change is Chahar was there. Chahar played that England series. So Adi, I'm not too sure. I mean, what you're saying कि हाँ 6 महीने से साथ में नहीं खेले, लेकिन एक दो सीरीज खेले, ऐसी बात नहीं है. But मुझे ऐसा लगता है the reason is not that they've played together. Reason is we just need to change our approach. जो अप्रोच दिखा है यू नो लास्ट 2-3 मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक बिफोर इंडिया रियलाइज्ड वी वर डाउन 3 विकेट्स, 3 ओवर में 3 विकेट गिर गए थे एंड वी डिड नॉट रिकवर. एंड न्यूजीलैंड वाला बहुत ही डर डर के खेले हम लोग. आई मीन दैट इज विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट कि हम लोग बहुत ही डर डर के खेले वो वाला न्यूजीलैंड वाला मैच. एंड आई थिंक दैट्स द की. Right. What do we have? Jay Shirki. Okay, sir. In recent interview, I said he and Captain Rag not involved in squad selection. No, no. See, officially, ऐसा नहीं होता. Officially, you have the selectors and the coaches. Sorry, selectors and the secretary, who's the convener of the committee. बट ऐसा नहीं होता कि कोच और कप्तान जो है उनको पता ही नहीं कि टीम में कौन आने वाले हैं, उनसे डिस्कस नहीं किया जाता. क्योंकि एंड ऑफ द डे कप्तान खिलाएगा ना. अगर मैं सिलेक्टर हूं, मैं कोई भी टीम बना के दे सकता हूँ 15 जन का, एंड इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज एंड ऑफ द डे कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि टीम हारे जीते जैसा भी प्रदर्शन हो, कैप्टन इज द मेन गाय. तो ऐसा I'll be extremely surprised कि अगर कप्तान और कोच से कंसल्ट ना किया गया हो. I doubt that happens. जनरली नहीं होता, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टर रह चुका हूँ, मैं खुद कप्तान रह चुका हूँ. ऐसा नहीं हुआ कि सिलेक्टर ने मुझे टीम दे दिया हो विदाउट डिस्कसिंग विद मी. ऐसा हो सकता है कि टीम मीटिंग पे ना हो, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यूर ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह. बट यू ऑलवेज हैव अ चैट. सिलेक्टर के साथ आप बात करते हैं सही कि अच्छा बताएं कौन से प्लेयर्स आपको चाहिए, या खुद मैं बोल देता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये प्लेयर्स चाहिए वगैरह. सेम जब मैं सिलेक्टर था चेयरमैन बंगाल में, the captain was always called, the coach was always called for a team meeting. अगर वो लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे थे तो आई पर्सनली वुड स्पीक टू कोच और कप्तान टुगेदर कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी अनलाइकली कि कप्तान और कोच को पता ही नहीं टीम सिलेक्शन के बारे में. या लेट्स गो. या see a lot of questions. Ishman again, don't you think Arshdeep should have got a chance in New Zealand series as we lack good left arm pace? Ishman, maybe yes, because I really like Arshdeep. और Arshdeep का है कि he's not just one season. मतलब we've seen him in 2 halves, right? पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में. So and he's only seems to be improving. So yes, I'm very hopeful कि बहुत जल्दी उनको मौका मिलेगा अर्शदीप को, क्योंकि yeah, we need a left arm seamer, especially in T20 format. Right. Okay. Okay. Sir, do you think Pan should be resting for the T20 and play test, as test is more important now? Love from Raniganj near Asansol. Vedant Singhania. Thank you, Vedant. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर वो T20, क्योंकि और एक चीज है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कब से आई थिंक 3rd वीक ऑफ नवंबर से पहला टेस्ट मैच है. आई डू अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं वेदांत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्मेट में ऋषभ को अभी भी अपना पूरा टेम्पो नहीं पता लगा है, स्टिल लुकिंग फॉर द राइट टेम्पो, तो वो T20 है. एंड इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर ऋषभ T20 खेले. ये T20 आप क्या खेल रहे हैं, आप एक हफ्ते का खेल रहे हैं, राइट? वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. 12 को देव रिपोर्टेड, 21 मतलब 8-9 दिन, देन करीब ब्रेक है 8-9 दिन. ब्रेक, लंबा ब्रेक मिल जाएगा टेस्ट मैचेस के दौरान.
आई थिंक ऑल दीज प्लेयर्स दे नीड अ ब्रेक फॉर श्योर. तो आप 8-9 दिन और खेल के फिर एक लंबा 10-15 दिन का अगर आप ब्रेक ले लेते हैं, आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. ऑलरेडी रिद्धिमान साहा है टेस्ट मैच क्रिकेट में, कोना भरत भी उनको भी रखा गया है. तो आई थिंक इट माइट, आई डोंट माइंड दैट डिसीजन एट ऑल, क्योंकि उस तरफ ब्रेक लंबा मिलेगा और साउथ अफ्रीका जाने से पहले ब्रेक मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जो है एक के बाद एक सीरीज है. आपका साउथ अफ्रीका खत्म होगा, फिर आपका वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, वो दोनों खत्म होते ही आईपीएल है, आईपीएल खत्म होते ही आपका साउथ अफ्रीका जो पैंडेमिक के चलते कैंसिल हो गया था, वो है वनडे सीरीज, वनडे T20. उसके बाद इंडिया इज गोइंग टू इंग्लैंड जुलाई में. सो टिल जुलाई इज नॉन स्टॉप क्रिकेट. So it only kind of makes sense that way. वेदांत की जितना मर्जी हो सके आप रेस्ट दें. कुलश्रेष्ठ आदि, okay, another Adi. Sir, what is the approach of BCI to play with 5 openers? I agree. उसमें से एक चीज तो है कि आई थिंक वेंकटेश, दे माइट लुक एट वेंकटेश एट नंबर 6. मुझे नहीं लगता they'll open with वेंकटेश. So yes, Adi, I completely agree. I yeah did not understand the reason why, uh, but it is what it is. I think, but like I said, Venkatesh would be looked at as a number 6-7 finisher, wala seam bowling all rounder and a finisher. Yeah, but I agree with you. I agree with you. Okay, what else do we have? Next question would be Austin. Hi, Austin. How you doing? Should Virat give up T20 eyes to focus on ODI? And I have a comment link to your latest tweet of my article on how Virat inspired me and the current youth. Please do read. Okay, I'll do that, Austin. I'll do that for sure. And okay, uh, I don't think so. I think I mean, he's been such a fabulous T20 player that I don't think he should be. And I think he also has that knack of moving from one format to the other. क्योंकि obviously that becomes very challenging, and मुझे ऐसा नहीं लगता कि he should give up unless he thinks कि it is getting too much वगैरह वगैरह. I think he still should play all three formats, but हाँ, managing workload and all that is important. Agar he has to give up a format or something, I think T20 would be it. Because obviously ODI Test cricket, absolutely not. I mean, Virat is the face of Test cricket as far as I see it. But yeah, if I think that's how it will happen as well. Virat, uh, if he has to manage his workload, it'll be rather taking off from T20s than ODIs and Test cricket, Austin. and I'll read it for sure. Yeah. Yeah. Oh, nice. Matches were first with Scotland. I know. It could have made a difference. I won't say would have. It could have made a difference. But yeah, it was a little bit of a surprising कि आपने पहले ही you play the two top teams in the group, Pakistan and New Zealand, and then Afghanistan, Namibia, Scotland. That just, yeah, it could have been done differently. No two ways about it. It could have been done differently. it it could have made a difference क्योंकि आप पहला मैच ही आप खेल रहे हैं. You want it to be a good match, but yeah, you don't want कि पहले दो मैच में ही आपका almost future तय हो जाए. You rather kind of uh, kind of एटलीस्ट पूरा 10-15 दिन का जो टूर्नामेंट है चले, बिकॉज पहले दो मैच के बाद ही फॉर मोस्ट ऑफ अस, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस हु फॉलो द इंडियन टीम, थोड़ा सा टूर्नामेंट सीम टू बी had lost its shine. Yeah. Okay, who do we have next?
Anupam Kumar, Ishan Kishan should be backed as an opener for T20 and ODI. We need left-hander batters at the top. Anupam, yeah, but my point is, again, just because he's a left-hander, maybe not. But yes, if he keeps performing, he should be. Again, like I said, end of the day, there has to be a philosophy that the Indian team should have, or irrespective uh, of reputation or whatever. I think need to follow that philosophy. और जो भी individual fit होता है in that philosophy uh, should play, as simple as that. And I think we are getting to that philosophy. We have at least found that last दो तीन match में. It'll be interesting to see if we kind of continue or not with it. You know, continue with that philosophy or not. Yeah. Unique creator, sir. I want to ask you some questions. Should Rohit Sharma be given the captaincy of ODI now after T20? Uh, Unique creator, I think I have done a video. थोड़ा देख लीजिएगा, and please, if you guys have not subscribed to it, do subscribe. Just और पीछे मैंने ये वीडियो बनाया था कि अगर स्प्लिट कैप्टनसी होता है तो स्प्लिट कैप्टनसी इज ऑलवेज, अगर आप देखें तो इट हैज बीन बेस्ड ऑन white ball cricket and red ball cricket. And that's what I think should happen, because there are a lot of, kind of the same players in both the white ball teams. T20 और ODIs में टीम लगभग काफी हद तक सेम है. तो to have two different captains and both the captains, विराट का तरीका अलग है to lead a side, रोहित का अलग है. So I think Rohit should be made the white ball captain and Virat the test captain, and and give, और एक important चीज है, वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 में, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप. अगर आपको चेंज करना है तो इट हैज टू बी नाउ, बिकॉज इंडिया अगले 1.5 साल में, 2 साल में, वर्ल्ड कप के पहले नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ ओडीआईज. वनडे से ज्यादा T20 और टेस्ट मैच क्रिकेट हम खेल रहे हैं. सो कहीं ना कहीं अगर आपने चेंज करना है, इट हैज टू बी नाउ, सो दैट वी गिव द न्यू कैप्टन और whoever the captain is enough time for the 2023 World Cup, क्योंकि that is one of the biggest, I think, huge chance of India winning an ICC tournament. 2023 50 overs. 50 overs is something that suits us. India में भी होने वाला है. So yeah, I agree. I think Rohit's split captaincy should be based on white ball and red ball, and I think if you're making Rohit the captain for T20s, should be making the captain for ODIs as well. Yeah. Right. Who do we have? Prashant Srivastav. So next year is World Cup in Australia. So Shubman Gill, Gaikwad, Padikkal get a chance in the team. I'm not sure, Prashant. I think we still got 8-9 months to go. They keep performing, then why not? But again, Prashant, मुझे बस एक ही चीज है कि that philosophy, for me that is more important, कि आप you follow that strategy, that tactics, that philosophy, and back that philosophy up. And players, I'll tell you this, Prashant, I think we have enough talent in our country. We have very big players like Rohit and Kale and Virat and all these guys. But we also have enough good players coming and behind them and in the pipeline. So yeah, I think I was just reading a lovely book on English cricket 2015 के बाद क्या क्या changes आए. How did English cricket change their approach towards white ball cricket? And it is really nice, that book. And I think we should follow that. We should follow that, and based on that, अगर शुभमन गायकवाड पडिक्कल बैठते हैं part of it, please go ahead, and why not? Yeah. Right. How can you play fearless until you don't have the trust that if top 3 gets out like 60 for 3? Adi, absolutely. Absolutely. यही मेरा,
आई डोंट नो, अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैं कमेंट्री जब कर रहा था, इंडिया न्यूजीलैंड, जब विकेटें गिरी शुरू में, एंड आई केप्ट सेइंग इट इज फाइन। आई डोंट नो, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा कि यार विराट आउट हो गया है, रोहित आउट हो गया, केल, हाउ कैन इट बी फाइन, बट इट हैज टू बी फाइन। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलना है, अगर फियरलेस क्रिकेट खेलना है उसका मतलब अगर कोई आउट होता है तो ठीक है, अनफॉर्चुनेट और बैड एज इट इज, बट यू हैव अदर गाइज टू डू द जॉब। सो आई थिंक वो चीज एज फैंस भी हमको दिमाग से हटाना पड़ेगा, एज कमेंटेटर्स, एज फैंस, की भैया होगा, अगर हम रिस्क ज्यादा लेंगे तो फिर फेलियर, जो जो सक्सेस रेट है वो भी थोड़ा नीचे आएगा, बट वी विल हैव टू कीप एट इट। और वो एक माइंडसेट है ऐसा। अब हम जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं ऐसा, अभी खेल के दिखाया है राहुल ने और रोहित ने, तो ऐसा है कि नहीं खेल सकते, खेल सकते हैं, लेकिन दिमाग से वो थॉट हटाना है कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा, पीछे वाले क्या कर पाएंगे, वो थॉट हटा देना है, वो नेगेटिव कह लीजिए, वो थॉट प्रोसेस जो है कि टॉप 3 अगर करेगा तभी हम जीतेंगे, वो थॉट प्रोसेस ही हटा देना है। चाहे हम लोग फैन के हिसाब से देखें, प्लेयर के हिसाब से देखें, कमेंटेटर्स के हिसाब से देखें, मीडिया के हिसाब से, वी जस्ट हैव टू गेट दैट माइंडसेट आउट ऑफ आवर हेड कि ठीक है, अनफॉर्चुनेट आउट हो गए, रोहित आउट हो गए, लेकिन ठीक है, पीछे और भी 5-6 लोग हैं, वो संभाल लेंगे। राइट। एक मिनट यार, क्विकली, yeah, sorry. Sorry, sir, can Venkatesh replace Hardik Pandya next T20 World Cup? Well, why not? Hardik needs to bowl, as simple as that. अगर हार्दिक, अब देखिए, हम सब बात कर रहे थे कि अश्विन के बारे में क्यों नहीं खेले, खैर उनको टेस्ट मैच भी खेलना था, एंड यू गाइस नो के व्हाट आई थिंक ऑफ अश्विन एंड हिम प्लेइंग इन द साइड। लेकिन जैसी पहले 2 मैच में हार्दिक बॉल नहीं डाल रहा था, आपके पास 5 ही विकल्प थे। अब जब 5 विकल्प होते हैं आपके पास, तो उसमें से आप 3 स्पिनर नहीं खिला सकते, आपको 3 सीमर खिलाने जरूरी हैं, राइट? जो सीमर फिर आप बीच में डाल सकते हैं, बीच के ओवरों में, पावर प्ले में 3 सीमर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही हार्दिक तीसरे गेम से बॉलिंग डालना शुरू किया, it just looked a different combination. That team combination was different when you have a sixth bowling option. So is it Hardik or Venkatesh? I think India bottom line needs a bowling option, a sixth bowling option, uh, preferably a seam bowling option, जो कि पावर प्ले वगैरह में डाल सके as part of the team. वो हार्दिक हो सकते हैं, वेंकटेश हो सकते हैं, आई रियली लाइक रिपल पटेल एज वेल, जो मैंने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, उनके ऊपर थोड़ा सा निवेश कर सकता है। शिवम दुबे की हम बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी निवेश होना चाहिए, शुड इन्वेस्ट इन हिम। सो बॉटम लाइन इज वी नीड अ सीम bowling all-rounder, sooner the better. Right. Ashish Tiwari, who's the real winner of T20 World Cup 2021 from your choice? The real T, I think, I think whoever wins this, Australia, New Zealand, uh, Australia and New Zealand have never won this before. So we'll have a new champion. So obviously that makes a lot of sense. Uh, that's one. Secondly, I think a couple of teams really impressed me. I think obviously Sri Lanka was very, very impressive. I thought Sri Lanka was extremely impressive. Okay, I think just give them another year and a half, they'll be a really good side, provided persist with the same group of players. I think उनके पास bowlers हैं, spinners हैं, batters are good. Yeah, there's a good side, but yeah, I think it's not a bad thing looking at from a World Cup perspective. Okay, we'll get a new champion in T20 cricket, be it New Zealand or Australia. So yeah. Aaron कहते हैं Hardik Pandya hasn't been in bubble for as many months as other players. So what's your say on him being rested because he must? No, I don't think he's rested, Aaron. Uh, yeah,
I, 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 I don't know. I don't think anywhere where it says Hardik's been rested. So, Aryan, I don't think Hardik has been rested. I think they're trying out. They will try out Venkatesh Iyer in that position. And yeah, I think he's just been dropped. Mhm. Alish said, why Shreyas Iyer but not Surya Kumar Yadav in the test team? Okay. Versus New Zealand, as Surya was also there in team in England as a replacement. Uh, Alish, I agree. Okay, I don't know what has changed. Maybe because Shreyas was not available उस tour में, उसलिए हो सकता है. Maybe they want to give Surya a break. वो भी हो सकता है. Uh, because these guys have been part of the setup for a while now. England में भी सूर्या थे. But yeah, what you're saying, I agree. सूर्या को अगर इंग्लैंड में लेके गए थे तो यहाँ पे क्यों नहीं? तो आई थिंक दैट माइट बी मोर ऑफ गिविंग सूर्या ब्रेक ऑल्सो, क्योंकि इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगले 6-8 महीने नॉन स्टॉप क्रिकेट. So maybe that could be the reason, Alish. But if that's not the reason, then I find it a little strange because I completely agree कि अगर आपने उनको इंग्लैंड ले गए थे आप उनको, तो फिर why not here without playing a game? Yeah, Alish, thanks for the question. Shivam, Sunil Gavaskar sir told Rudraj can serve India in all three formats and his domestic stats define that also. Yes. Yeah, absolutely. Absolutely. I think ऋतुराज सिर्फ वही नहीं, अगर आप उनको उनका खेलने का तरीका अगर आप देखें, that will also tell you that um, uh, that he can play all three formats. Or yeah, I mean he's been playing domestic cricket for so long. Domestic cricket में अच्छा खासा record है उनका as in first class cricket में. So yes, I think ऋतुराज जो उनका technique इतना orthodox है should be able to play all three formats. Or by the way, I mean he came into the forefront with 50 overs cricket, list A, and also with first class cricket. T20 में तो अब वो करना शुरू किए, लेकिन अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें पिछले 3-4 साल का, वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में द थ्री नेम्स दैट वर डूइंग द राउंड्स ओपनर्स का was Priyank Panchal, Abhimanyu Ishwaran, and Ruturaj Gaikwad. So it's not that he's a T20 player. He came into the limelight forefront through red ball cricket because of red ball cricket. Right. Shashank Chorase in selection process, why top order batsman? Okay. Okay. Quickly, Shashank, I think I've already answered this question. क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, we've been looking at कौन ज्यादा रन बना रहा है, राइट? और कौन ज्यादा रन बनाते हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट, जो आप 1-2-3 ज्यादा से ज्यादा 4 पे बैट करते हैं. अगर 1-2-3-4 पे आप बैट करते हैं तो आपके पास मौका ज्यादा है, तो आप रन ज्यादा बनाते हैं, तो फिर आपका आपका फिर वो पीछे चला जाता है, मतलब आपका नाम ऊपर आ जाता है. अगर आप 5-6 पे बैट कर रहे हैं या 4-5-6 पे बैट कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी स्कोरिंग एज मेनी रन्स एज योर टॉप 3. तो वो दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, बट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. शशांक, मुझे लगता है कि वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट स्किल सेट रादर देन नंबर्स, प्योरली नंबर्स. नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ नंबर्स देखना शायद सही नहीं होगा. Right. We've got another 5 minutes. Dhruv Garg, do you think Samson and Mayank should have been picked ahead of Ruturaj and Shreyas and Mayank? Yes, but I think Mayank. Yeah, I would go with that. I would go with that. I think Mayank has been really unfortunate. अगर लास्ट 1 साल में अगर कोई प्लेयर who's been really unfortunate has been Mayank. टेस्ट मैच उठा के देख लो आप. One day cricket, he was part of it. T20 cricket, he was part of the team. I just feel for Mayank, and he's such a lovely guy. He's a superb guy, super player. I feel for him. I definitely feel for Mayank. Sanju, uh, Sanju over Ruturaj and Shreyas. I think Ruturaj I can understand, and Shreyas is a different ball game. Shreyas के साथ I think Sanju we have to understand is a top
top order batter, 1, 2, 3. With Rituraj, I can understand, not with Shreyas, because Shreyas bats at 4, 5. So Sanju, yes, but Sanju ke upar, yeah, I just have a feeling that he's maturing slowly, and he's maturing uh, rather slowly as well. He's been around for 5, 6 years. He's still young, uh, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख के लग रहा है कि लाइन के पीछे गए हैं. जो 1, 2 साल पहले जहाँ पे थे संजू, he's not in that same position in the queue. I think the others have kind of come ahead of him, is what I think, because ईशान थे नहीं, right? ईशान क्यू में पीछे थे, ईशान उनसे पहले आ गए हैं. ऋतुराज अब obviously पहले आ गए हैं. So yeah, I mean he has to be a little more careful now then. Right, let's go. We have Ashish ka. Okay, Ashish Dubara. What changes you think in the mindset of Indian team ahead of T20 World Cup 22? I think just be fearless. I mean, again, fearless is a very uh, you know, highly used word, and it's a very vague word. Fearless का मतलब क्या है? कि आप कुछ भी जाके मार के आ जाओ और बोलो कि भैया fearless cricket है. No, I think it is a philosophy जहाँ पे you back your instincts. अगर मैं स्वीप नहीं खेलता तो मैं स्वीप नहीं मारूंगा, राइट? बट मैं दूसरे शॉट मारूंगा जो मैं खेलता हूँ. अगर मेरे इलाके में बॉल है तो मैं मारूंगा शॉट. ऐसा नहीं कि मैं उससे फिर ऐसा नहीं. सो फॉर मी आई थिंक द आइडिया इज टू प्ले, टू टेक मोर कैलकुलेटिव रिस्क. You are taking risk, but जिसके percentages are better than absolutely nothing. साथ में और एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि इंस्टेंट सक्सेस शायद नहीं मिले, राइट? ऐसा हो सकता है कि इवन वर्ल्ड कप में वी माइट नॉट गेट सक्सेस, राइट? बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर वही है. फ्यूचर इज हाउ इंग्लैंड प्लेज T20 क्रिकेट, हाउ वेस्ट इंडीज प्ले T20 क्रिकेट. Future, I don't think, is how we were playing T20 cricket. Over dependence on 1, 2, 3. The future is that. If the future is that, so we have to embrace it. आज नहीं तो कल. And if we have to embrace it, initially कोई भी काम आप जब शुरू में करते हैं और आपको आदत नहीं है, तो वो सक्सेस रेट उतना नहीं होता. So we have to be very careful कि even though we might not be successful शुरुआत में, we have to persist with it. Right. Vishal Pandey Saab, has the time come to allow Indian players to play foreign leagues? It will give them good exposure. What's your take? I'm from Purulia. Hey, Vishal, from Purulia. I think, अच्छा, इसके बारे में मैं भी वीडियो बना चुका हूँ 1-1.5 साल पहले. हो सके तो देख लीजिएगा वेरी क्विकली, बिकॉज काफी लोगों का क्वेश्चन है. अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है और आपके चांसेस भी नहीं है इंडिया खेलने के, एंड you've played or whatever, तब आपको परमिशन मेरे हिसाब से देना चाहिए. फॉर एग्जांपल सुरेश रैना, if he wants to go and play now, he should be allowed to. क्योंकि अगर, और बाकियों को नहीं, and I'll tell you quickly the reason why. क्योंकि अगर फिर डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या होगा? अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को इनकरेज करने लगे कि आप CPL जाके खेलो, आप PBL खेलो, वगैरह वगैरह, वैसे ही हम लोग बात करें कि इंडियन क्रिकेट एक के बाद एक सीरीज है, टाइम नहीं है, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको तो टाइम नहीं है, दैट इज वन. फिर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जाने लगेंगे जो इंडियन क्रिकेट नहीं खेल रहे या वो टीम में नहीं है, वो चले जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अभी संजू सैमसन अगर टीम में नहीं है तो संजू कहेगा यार मैं बिग बैश खेलने जा रहा हूँ. देन व्हाट हैपेंस टू डोमेस्टिक क्रिकेट? फिर डोमेस्टिक क्रिकेट कौन खेलेगा? रणजी ट्रॉफी कौन खेलेगा? सैयद मुश्ताक अली कौन खेलेगा? तो दैट इज अ वेरी ट्रिकी वन. तो इसलिए मेरा मानना है कि हाँ, पीपल हु kind of have reached their peak, if they want to go and play, let them play. But मेरा ये मानना है कि अगर should be allowed, but they should not be allowed to play domestic cricket because they would not have the time to play domestic cricket. So you have that choice, you take that chance, take a call and go. But yeah, I think we have to be very very careful कि international नहीं यार, overseas T20 cricket not at the cost of Indian domestic cricket. As it is, India A और India का शेड्यूल इतना पैक्ड है कि
टॉप प्लेयर्स तो या इंडिया खेल रहे हैं या इंडिया ए खेल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में इंडिया ए जा रही है, राइट? डोमेस्टिक क्रिकेट जब चल रहा होगा तब you will not have the top what 40 guys of the country playing domestic cricket. तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में रखना जरूरी है विशाल. Right. Okay. Next. Okay. Last two questions, guys. What David Warner did as well within the rules. So what's the issue? Yeah. Shubhajit, I've made all these videos. Please, when you get the time, do have a look at it. As long as you're within the framework of the rules, it is absolutely fine. If it's in the framework, within the rules, it's fine. I might disagree, which is okay. We all have the right to agree and disagree. ठीक है. But that does not mean what Ashwin did or is saying is wrong. There's a clear format, there's a clear boundaries जो कि rule book में boundaries दे रखी हैं हमें. Just follow the boundaries. अगर ठीक है, अगर कुछ लोग हो सकते हैं, people who might want to walk or whatever, that is fine. If that suits them, that is absolutely fine. But the line in the sand is the rule. वो क्रॉस नहीं होना चाहिए. Everything else I think is fine. ये जो क्या कहते हैं, spirit of the game and gentleman's game and all. I mean वो convenience के हिसाब से चलता है. Anyways, yeah, let's take two more then. Amir Hafiz Khan साहब कह रहे हैं have Indian batters skill against me. Yes, I agree. I mean it has Amir साहब. अगर आप देखें इसके दो कारण है, क्योंकि एक ज्यादातर लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास मतलब आप उतना क्वालिटी स्पिन नहीं खेल रहे हैं, आप ज्यादा सीम बॉलिंग खेल रहे हैं. करेक्ट. इंडिया में कुछ आप टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें वैसे भी वो स्पिन अलग ही स्पिन है, opposition spin is also very average or whatever. So international cricket में quality of spin is not that great. Secondly, क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है and we are getting used to hitting through the line, you know, तो वो थोड़ा सा is also affecting how we play against spin, especially रेड बॉल क्रिकेट. और जो मैंने पहले कहा उसका एग्जांपल देता हूँ. अगर आप शुभमन गिल देखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, उनको देखें. केएल राहुल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं काफी दिन. आप अगर ऋतुराज देखें, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, मयंक देखें, वो स्पिन अच्छा खेलेंगे. जैसे ही आप 3-4 साल आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बिता देते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से थोड़े से 3-4 साल के लिए अलग हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे योर स्किल सेट जो है वो मीडियम पेसर के अगेंस्ट अच्छा हो जाता है. स्पिन के अगेंस्ट इट्स नॉट दैट ग्रेट. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एग्री आमिर साहब के it's affecting how we play spin. Okay, last question. NCRT lovers. Yeah, arza ho gaya NCRT. It's been decades. Why BCCI don't give chances to Prithvi Shaw? Maybe he's our next Sehwag in white ball cricket. Well, NCRT, my question is, yeah, he will get his chances if he's good enough. I think he's extremely good talent. लेकिन कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, सिर्फ टैलेंट की नहीं. परफॉर्मेंस भी है, ऐसा नहीं कह रहा मैं परफॉर्मेंस नहीं है. वो खुला क्रिकेट खेलते हैं, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट व्हिच यू नो वी बीन टॉकिंग अबाउट, वो भी खेलते हैं. बट कुछ चीजें, आई मीन फॉर एग्जांपल ही इज 21 22, द फिटनेस लेवल्स, fielding levels, I think those things are very very important as well, just because kyunki that just tells me the how much a player is committed towards the skill, towards the team, you know, level of fitness, fielding वगैरह. I think apart from batting, I think some of the other things also we need to look into, जरूरी हो जाता है. And again like I said, वो brand of cricket खेलते हैं जो जिस brand की मैं बात कर रहा हूँ. So I'm also a big fan of his batting, no two ways about it. So we'll have to kind of be a little more little more patient. He's only young, 21 22. So I think we'll have to wait and see how it goes. Right guys, thank you so much. Almost 1 घंटा होने को चला है. Again, thank you very very much for joining in, and do
have a look at all the videos. Do subscribe if you still haven't. I'm also at the same time sorry bhi kehna chahunga if I haven't been able to take your questions. I see there are a lot of questions out there. Thank you again. Thank you very, very much for the love and support. Please keep backing, and I'll see you soon with a new video and a live sometime soon again. Thank you again, and sorry for to those of you I couldn't take your questions. And I'll see you soon. Thank you. Take care.